There is some Supreme Court judgment that is ignored करके सेंट्रल एक्साइज एक्ट में भी है क्या किसान इग्नोर करके कुसुम इग्नोर वाला दिखाइए तो क्या है उसमें निकालिए तो जजमेंट कुसुम इग्नोर वर्सेस उसमें उन्होंने इस इशू को भी कंसीडर किया है सेंट्रल एक्साइज मैटर में। मैं पहले इनकम टैक्स की पूरी जजमेंट आपको दिखा देता हूँ। प्री डिपॉजिट सेंट्रल एक्साइज में भी है। यस हाँ, प्री डिपॉजिट है, उसी का ये फॉर्मुलेशन आया मतलब। तो अब दिस सर्कुलर इसको डिस्कस करके फिर इवेंचुअली 20% डिपार्टमेंट का सर्कुलर आता है कि 20% इज द नॉर्म, बट माय पॉइंट इज नॉर्म इज नॉट इन द केस ऑफ हाई पिच। हमको ये बताइए जी 20% से कम को हम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट और द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ये चीज को बताइए। लेजिस्लेचर तो है नहीं मतलब, दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। नो अपील में प्रावधान किया है। सी आप हमको ये पॉइंट को बताइए कि अगर अपील में हम वेव करने का पावर हमारे को है, हम कर देंगे, हमें क्या है? मतलब हमको मालूम है क्योंकि पीएफ में भी ये प्रावधान है। मतलब उसमें प्रॉब्लम है, पीएफ में हाई पिच का नहीं हो सकता है, उनके पेपर मतलब व्हाट हैपेंस इज हियर, पीएफ इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। ये भी तो बेनिफिशियल देश के लिए एग्जैक्टली। मतलब 2014 में वन ऑफ द बिग पॉलिटिकल इश्यूज वाज 12,000 करोड़ का जो वोडाफोन पे टैक्स लगाया था, एंड दैट वाज सेड टू बी कंप्लीटली इलीगल, सेइंग कि किसी कंपनी पे इतना टैक्स लगाएंगे, अपील फाइल करने के लिए आप 2% मांगेंगे, कंपनीज विल गो बैंकरप्ट, दैट गोज अगेंस्ट सीज ऑफ बिजनेस, दैट्स व्हाट इलाहाबाद हाई कोर्ट सेज। नो व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन व्हाट? प्लीज मिस्टर दुबे प्लीज टेल अस व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन दिस इशू। ऑन व्हिच इशू माइलोज? हमको तो हमारे को एक चीज समझा दीजिए कि 20% से कम में हम कर सकते हैं क्या, बताइए। माइलोज हाई कोर्ट ने कहा है, यही मैं बता रहा हूं। हाई कोर्ट पेज 12 पेज 131 माइलोज क्या बोलते हैं? क्लॉज 7 पे आ जाएंगे माइलोज। हाँ क्या हुआ है? हैविंग कंसीडर्ड पेज 134 पे नीलाब दुबे सी अमित चौधरी। यस what is the matter, Mr. Dubey? Maloj, this matter relates to high pitch assessment. Basically, high pitch assessment is a concept, Maloj, regarding applying of stay, Maloj. So, if I'm briefly, I will not go into facts because facts is it's an assessment order that is already under appeal before the first appellate authority, Maloj. Maloj, I had filed a my return income for assessment year 18-19. Your appeal is pending. It's pending, Maloj. I'll just say, give me just 2 minutes, Maloj. Your appeal is pending. And where you have also filed for stay. Yes, Manoj. And stay has been rejected. Has been granted on 20% payment. Conditional granted. Yes. What, my lords, from the norm, which is exactly what Government of India also agrees to, it's a 20% norm. Yes. But there's an exception to that rule. So that is all I want to point out, my lords. So, my lords, I had filed a return. My return income for assessment year 18-19 was 26,93,557, my lords. Yes. I filed. A reassessment notice was issued and a reassessment proceeding was carried out. In that reassessment proceeding, my lords, all my purchases on which I had paid GST were disbelieved, saying they are all related party purchases and you have committed fraud. Though I tried to supply vehicle numbers, I said I paid GST already on these purchases. Yes. But it was disbelieved. And they said that the total amount, the total income that they calculated was 13 crore 84 lakhs 43,000 something, Maloj. Yes. So what I had filed was 26 lakhs. They calculated my income as 13 crores, Maloj. And Maloj, on 26 lakhs at 30% payment, I would have ended up paying around 7.5 lakh rupees as tax. Here they levied tax at 100%, saying these are unexplained investments. So 100% pay and levied a tax of 13 crore 84 lakhs, Maloj. So now, Maloj, when 13 crore 84 lakhs is, so it is something like this, Maloj, that if I file a return tomorrow of 20 lakh rupees and they assess me for 200 crore rupees, so even to go in an appeal will be an impossibility for me. Yes. No, now, Maloj, why? So there's a reason, there are two reasons, Maloj, and this reason has continued from 1969, Maloj. The concept of high pitch assessment first came in 1969, Maloj, where the Deputy Prime Minister had given a statement in the Parliament, and that was adopted by CBDT. CBDT said wherever and the reason for high pitch assessment was exactly this, Maloj, and it has continued till Allahabad High Court very recently in 2022 has gone ahead and connected it with the government's policy of ease of doing business, Maloj, and saying this cannot be permitted. The reason, and Maloj, the recent circular on high pitch assessment also talks about these officers being taken to task. But for that, I have to go and file and complain and take enmity of the department. As a trader, Maloj, I cannot possibly do that. But I will bring the law to my lord. So my law, just the law, nothing else, Maloj. Yes. So Maloj, the first circular and eventually decided by a coordinate bench of this court also, Maloj. So yes. Till that point, I'll bring it to this, Maloj.
Manoj, I could just pass on the circular, but I would eventually pass on the judgment in which these circulars have been quoted. So this was the first circular that brings it, Manoj. Yes. And both these circulars that I passed on, Manoj, are fairly old established principles, Manoj. One is, Ali, what must I? So, Manoj, the first circular, if my lords will read, clause 2, the first single page that I passed on, reads as the then, I'll just read off with you. The then Deputy Prime Minister had observed as under, where the income determined on assessment was substantially higher than the return income, say twice the latter amount. They are just talking about twice. The latter amount or more, the collection of tax in dispute should be held in abeyance till decision on appeal, provided there was no lapse on part of the SSC. This was the first one. Now comes, Manoj, the second one. This is where the instruction number 1914, where the complete instructions were collated for the first time, Manoj. In Manoj, if this, so there's a B which talks about stay petitions, Manoj. First page bottom. B3 is the important one, Manoj. Yes. The decision in the matter of stay of demand should normally be taken by the assessing officer TRO and his immediate superior. The higher superior authority should interfere with decision of AO TRO in exceptional cases. Example, where the assessment orders appears to be unreasonably high-pitched or where genuine hardship is likely to be caused to the SSC. The higher authority should discourage the SSC from filing review petitions before them as a matter. So this is the first time that it comes into play. No, Mr. Counsel, there is some Supreme Court judgment that is ignored करके सेंट्रल एक्साइज एक्ट में भी है क्या किसान इग्नोर करके कुसुम इग्नोर वाला दिखाइए तो क्या है उसमें निकालिए तो जजमेंट कुसुम इग्नोर वर्सेस उसमें उन्होंने इस इशू को भी कंसीडर किया है सेंट्रल एक्साइज मैटर में मतलब मैं पहले इनकम टैक्स की पूरी जजमेंट आपको दिखा देता हूँ प्री डिपॉजिट सेंट्रल एक्साइज में भी है यस हाँ प्री डिपॉजिट है उसी का ये फॉर्मुलेशन आया मतलब तो अब दिस सर्कुलर इसको डिस्कस करके फिर इवेंचुअली 20% डिपार्टमेंट का सर्कुलर आता है कि 20% इज द नॉर्म बट माय पॉइंट इज नॉर्म इज नॉट इन द केस ऑफ हाई पिच हमको ये बताइए जी 20% से कम को हम कैसे कर सकते हैं कर सकते हैं इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट और द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ये चीज को बताइए लेजिस्लेचर तो है ही नहीं मतलब दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन नो अपील यस यस अपील में प्रावधान किया है सी आप हमको ये पॉइंट को बताइए कि अगर अपील में हम वेव करने का पावर हमारे को है हम कर देंगे हमें क्या है मतलब एक कोऑर्डिनेट बेंच का जजमेंट मतलब एनेक्शर पी Milos will look at annexure P12, 131, page 131, Milos. कुसुम इग्नोट कुसुम इंगट है इग्नोट है इंगट याद आ रहा है कुसुम इंगट से हाँ वॉज यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का है शायद 2000 का तो सुप्रीम कोर्ट का है हमको मालूम है क्योंकि पीएफ में भी यही प्रावधान है मतलब उसमें प्रॉब्लम है पीएफ में हाई पिच का नहीं हो सकता है उनके पेपर मतलब व्हाट हैपेंस इज हियर पीएफ इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ये भी तो बेनिफिशियल देश के लिए एग्जैक्टली मान लो 2014 में वन ऑफ द बिग पॉलिटिकल इश्यूज वाज 12,000 करोड़ का जो वोडाफोन पे टैक्स लगाया था एंड दैट वाज सेड टू बी कंप्लीटली इलीगल सेइंग कि किसी कंपनी पे इतना टैक्स लगाएंगे अपील फाइल करने के लिए आप 2% मांगेंगे कंपनीज विल गो बैंकरप्ट दैट गोज अगेंस्ट ईज ऑफ बिजनेस दैट्स व्हाट इलाहाबाद हाई कोर्ट सेज नो व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन व्हाट प्लीज मिस्टर दुबे प्लीज टेल अस व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन दिस इशू ऑन व्हिच इशू मनोज हमको तो हमारे को एक चीज समझा दीजिए कि 20% से कम में हम कर सकते हैं क्या बताइए मनोज हाई कोर्ट ने कहा है यही मैं बता रहा हूं हाई कोर्ट में पेज 12 पेज 131 मनोज क्या बोलते हैं क्लॉज 7 पे आ जाएंगे मनोज हाँ क्या हुआ है having considered page 134 पे yes it will require a reading of 3 pages but I will just point it out it can be done Manoj having considered contentions put forward by the either side on perusal of records if we peruse the circular of respondent number circular of the respondent i.e. instruction number 1914 जो मैंने pass on किया issued by CBDT and clause 2B3 of the said instruction clearly refers to the provision laying down the procedure
for consideration of an application for grant of stay in matters relating to high-pitched assessment. For ready reference, clause read down. Whether the tribunal has rejected your application. Not tribunal, my lords. ये जाता अपील नहीं. अपील ये कल पहले तो नहीं, नहीं. ACIT के पास ये एप्लीकेशन अपील प्रेफर पे। करेंगे मैं ACIT के पास गया, वहां से प्रिंसिपल CIT के पास गया और वहां से रिजेक्ट हुआ है, उसके खिलाफ मैं आया हूं. तो वहाँ अपील में भी तो नहीं जा सकते मतलब अपील अपील में क्या है 20% डिपॉजिट हाँ इसीलिए तो वो करना है उनको और लॉर्डशिप ये हाई पिच असेसमेंट जो इस तरह की जो ये Terminology टर्मिनोलॉजी है। यूज कर रहे हैं मैं नहीं, डिपार्टमेंट यूज कर रहा है. Yes. No, Lordship. मैं नहीं कर High रहा हूं. pitch assessment will not be made very blindly by the department. For the reason that if the assessment is supposed to be high pitched, Lordship, that addition of income should be on frivolous grounds. Number one. Secondly, principles of natural justice का पालन नहीं किया गया होगा. And non-application of mind by the assessing officer while passing the assessment order. And fourthly, Lordship, the assessing officer has passed the order by way of negligence. तो यहाँ पर ये चारों conditions तो है ही नहीं. Because the survey was conducted in the business premises of the SSC, Lordship, under 133 capital A, Your Lordship. And in that survey, various documents were found जहाँ की he was doing. मतलब ऑर्डर पढ़ लें पहले, मैं बहस कर लेता हूं. will do it will पहले हम जो सोचते चाहते वो तो देखें. मतलब कोऑर्डिनेट बेंच जजमेंट है मतलब. yes कोऑर्डिनेट बेंच जजमेंट है मतलब. yes Relying on Bangalore. yes मैं रीड मतलब. wait मतलब I will. I am reading something else. मतलब cross applicability of principles in taxation is very well accepted if it is not available in the same set of laws, Manoj. So same set of laws here constitutes Income Tax Act, Manoj. yes And a coordinate bench judgment, Manoj, with utmost humble submission would be binding on Manoj. क्या किया कोऑर्डिनेट बेंच ने क्या हाँ, किया मैं वही पढ़ रहा था Manoj. Paragraph 8. क्या A plain reading of the aforesaid instruction makes it clear that the assessing officer or authority superior to whom have granted ample powers for considering application of stay conditions on the ground on which the stay has been sought. A reading of the provisions shows ample discretion is left to assessing officer to consider the same. It would be relevant at this juncture to refer to paragraph 16 of the judgment of Karnataka High Court in case of Flipkart, which reads as under. अरे भाई इसमें तो डिसाइड भी नहीं किया, सीधे आपको बोला डिसाइड करने के लिए जाओ. मतलब एक बार सुन पढ़ तो लें. हाँ पढ़ लिया, आपसे ज्यादा फास्ट पढ़ते हम. डोंट टेल अस कि आप कितना पढ़ते हैं, हमारी पढ़ने की कैपेसिटी. मतलब फ्लिपकार्ट पढ़ लिया आपने? यस तो मतलब ऑर्डर पास कर दें. यस आई विल. I'm also relying on the order of this honorable court, Your Lordship, pertaining to high pitch assessment, and appeal was preferred, and appeal was also dismissed by the division bench. Yes. This order was passed by the coordinate bench. No? Coordinate bench, and thereafter the SSC went in appeal, Your Lordship. Yes. Manoj, I'm passing. That was pertaining to high pitch assessment. Manoj, these are two orders. One Yes. order I've already passed. The second is Flipkart. I'm passing the order, Manoj. Yes. And Yeah. there's a third one, Manoj, which I'll Yes. just pass on. Manoj. Yes. Allahabad High Court. आप भी दे दीजिए, आप भी दे दीजिए. Yes. Manoj. इसको रिजर्व करो, फिर लिखाएंगे. Manoj. Oblige. That is right. चलो. And Manoj, ये एक Yes. दे दीजिए. oblige, Manoj. Yeah, I missed one. Apologies. दे दीजिए जितना देना. And the Supreme Court has said, Manoj, in one of the orders of my lord, will notice that Yes. exemption can be 100%. Yes. Oblige, Manoj. Yes. Argument है डिजर.